बेटा ये हुआ ना, तो अब इसमें क्या होगा, सी व्हाट यू हैव इज हियर. अब इसमें व्हाट हैपेंस, सी व्हाट यू हैव डन इज, this is the way, right? So you have to understand how the composite key works. So I had said that you have to add the merge here, right? Here also. This is the procedure. This is not a table. That is the first mistake. So what you need to do is that this is closing stock valuation as target. Using opening stock as source. मतलब ये है ना कि आप ट्राई करो. ऑन टारगेट. अब इसमें जो कॉम्पोजिट की है, द कॉम्पोजिट की इज करेक्ट. ये ठीक है. Now when not matched by the target, you have to insert all the columns. Company name, batch name, godown name. Details क्या है? What is a detail? Which column is a detail? Stock name. नहीं देवज्योति, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं ना. स्टॉक आइटम नेम ना, दिस इज वेरी, मतलब एकदम खराब है, एकदम खराब है. Closing balance, very poor actually, I must tell you. It's just pathetic. Source dot value comma source. क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में कम सकता. नहीं बेटा, आप नहीं, आप प्लीज डोंट कम इनटू इट लाइक दिस. नहीं Please. सर, I पूछना चाहता. नहीं, I don't. Please, this is really not a. This is not a pleasant thing to do. कुछ समझ में नहीं आता, मतलब मेरे को half the times this thing. अब पूछ ही लो तुम. I don't know क्या है, because some of the questions I'm not able to make out कि क्या है. हाँ बोलो. सर मैंने तो टारगेट में सिर्फ 4 कॉलम्स लिए हैं, तो इंसर्ट में सारे क्यों प्रिंट कर रहा हूँ सर? Because if this composite key matches, then you add this closing balance and closing value ना. अगर मैच नहीं करा तो पूरे का पूरा रो ऐड करोगे ना. ओके. अदरवाइज टारगेट डॉट क्लोजिंग बैलेंस यही था बस. क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू सोर्स डॉट ओपनिंग बैलेंस. करो अब जो भी है, बाकी तुम करो. टेरेबल. इट्स वेरी पुअर. ये हो गया. अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इसको ऐसे ले लो, प्रोसीजर लो,
तो ये समझ में आया दिव्यज्योति कि नहीं आया? यस सर। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ मैं क्या बोलूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाह रहे हैं। ये आ गया तुम्हारा, हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा मर्ज का, यही था पूरा। सर और एक क्वेश्चन है सर। पूछो पूछो, अब जो भी पूछना है, यू आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। सर आपने मर्ज क्लोजिंग वाला लिए हैं, तो प्रोसीड्यूर जो नेम है उससे क्यों नहीं लिए सर? कौन सा बेटा? प्रोसीड्यूर नेम से सर। किससे? नीचे से। अभी इसको मर्ज कर देंगे ना, इफ दिस ओपनिंग वैल्यू इज देयर ना, तुम कहाँ फंस रहे हो इसमें? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन दिया ना सर मर्ज में, हाँ, एज टारगेट, तो वो प्रोसीड्यूर का नेम क्यों नहीं लिए? मैं एक्चुअली क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया। सर मर्ज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन है ना सर, आप लिए हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, मैंने लिया था सर जो प्रोसीड्यूर का जो नेम है वो लिए थे। नहीं, ये गलत तो है ना। मर्ज इज अ टेबल ना, आप देखो ना, आप ट्राई तो करो ना दिव्यज्योति, आप इसमें ट्राई तो करो ना। कितने सारे पड़े हुए हैं यार मर्ज के केसेस। आप थोड़ा तो इंटरेस्ट लो तो आपको चलेगा। कितने सारे मर्ज के केसेस है ना, कहाँ प्रोसीजर होता है। आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो ना इसको। आप नहीं कर रहे हो ना इसको, यू नॉट डूइंग इट विद इंटरेस्ट, यू सिंपली हैव टू कॉपी इट एंड रिप्लेस द टेबल नेम्स। थोड़ा इंटरेस्ट लो तो आराम से, देयर आर 20-30। आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो। नहीं समझ गया सर। नहीं, आप समझना क्या मतलब, इट्स वेरी, थोड़ा सा आप मेहनत करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम सर नहीं फंसूंगा नहीं नहीं सर बेटा, मर्ज मतलब में। इट्स बिकॉज आप टेबल की जगह प्रोसीजर लगा रहे हो, तो मतलब मेरे लिए भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। It's not that I've not taught you, because you've done it 2 times. You've claimed that you've done it 2 times. Plus, there are sample procedures here. Jyoti, tell me, how do I explain this? People even test the code and give it. ना मतलब आप try भी नहीं कर रहे हो। नहीं सर नेक्स्ट टाइम नहीं फंसूंगा सर नहीं, मर्ज आई एम में। नॉट, क्लियर हो पता नहीं दिव्यज्योति भाई क्या नेक्स्ट। आई कुडंट बिलीव इट एक्चुअली, कि जब आपने प्रोसीजर लिखा दिस थिंग, बट दिस आई कैन इवन गेट अ 10th पास गाय टू डू इट। अब टेलिंग यू दिव्यज्योति, सीरियसली जितना इजी है 8th पास लड़का भी कर लेगा। मैं इतना इजी बना चुका हूँ, जिसका थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा वो खींच ले जाएगा। एंड इट्स ऑल बिकॉज दिस अ कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट। करना ही नहीं है ठीक से। Because please don't tell me you don't have this procedures. ये है कि नहीं है बेटा? ये है सर। तो इसमें जब ये था, मतलब there are about 20 such, everywhere we have used merge, then why was there a confusion? बताओ ना, मतलब what is the how can there be a confusion here? नहीं सर कंफ्यूजन नहीं सर। I don't think so. I mean, you're not, simply not clear, or you're not interested at all.
मुझे तो मज़ा नहीं आता यार इसमें. I just don't enjoy this one. सॉरी सर. नहीं इसका क्या मतलब है सॉरी का? You don't mean it. Please, I mean, it's not sorry, it's half baked. I mean, I have lost a thread. Intermediary 1, second intermediary 1, so next one into. So what you have is and then why would the problem is what happens is that when you do it like this, now the other person does not take you seriously in other things. Then you lose credibility. कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं. इधर आओ बेटा, यहाँ तक तुम पहुँचे ना, यहाँ तक पहुँच गया कोड. अब इसमें क्या होगा? This temporary table will remain only up till the time this code is run, right? So now I pick this up from here to here. यहाँ पे भी चलेगी. ठीक है बेटा? So now keep on typing it from your end. You know how to do this? Shall I give it to you? Control A, Control C. Keep on typing at your end. देवज्योति इसको seriously करना बेटा. मतलब really, I am not expecting that there will be a problem. Seriously, it's like throwing away an opportunity. Now what happens is, this is one. ठीक है ना? ये एक और डेट आ गए.
Okay. Now what I will give you the second one is, because this is one table. Now note it down. And the second table is select star from. Now you don't have to deal with anything else. Historical valuation. Is this clear? Yes. So what you would do is, this is the weighted average rate 2. So from the running sum, you will do a join of historical valuation based on batch name, go down, company name and stock item. And you will pick up the weighted average rate from, you understand, these two will be joined based on these, right. And you will pick up the weighted average rate for that order date which is less than equal to the running sums order date. And that order date should have the maximum value. But the maximum order date value पकड़नी पड़ेगी जो कि इससे कम हो. उस पे जो रनिंग सम की वैल्यू है वो लेके आओ. So for then do is join between historical valuation and running underscore sum 1 based on company name, batch name, stock item name and go down. Step 2. Pick up the maximum order date from historical valuation less than or equal to the order underscore date from running underscore sum 1. ठीक है बेटा? Then for the given order date as in step 2, pick up the weighted average rate 2. यहाँ तक आओ. Then that weighted average rate 2 when multiplied by the closing balance value, क्योंकि ये closing balance value running sum है ना, that will give you the closing stock value for each date. And then for each item we have to pick up the maximum order date, right? और उस पे जो closing stock value है that will be again fed into the closing stock valuation. ये clear आया कि नहीं आया? अभी you do it up to here. So you join these two tables by these 4 columns. Then pick up the maximum order date from historical which is less than equal to the order date from the running sum 1 based on these joins also. Correct? And then based on that particular order date you pick up the weighted average rate, and then that weighted average rate को जो है तुम इसमें डाल दो, ऐड करो कॉलम को. ये थोड़ा ट्रिकी है. Do you want to give this a shot or shall I make it? बोलो.
मैं ट्राई करता हूँ हम्म, बोलो ट्राई बेटा. करता हूँ सर. यस सर. ये थोड़ा ट्रिकी है, बट देन जस्ट गिव दिस अ शॉट. ओके, चलो, है ना बेटा? Just give this a shot for half an hour. Let's see, and then let's try to take it up. अरे